सेक्शन हम सब पढ़ चुके हैं, वी विल रीड देम अगेन टुडे विद द जजमेंट। जजमेंट का जो रेशियो आपको लिखना है वो देखना है, वही देखना है कि अगर आपके पास कोई केस है क्या सेम फैक्ट्स हैं उस केस के। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पीपल टेल मी यार वो अपील का पैसा हम तो दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लब है, सर्विस टैक्स में होता था, ईसीएल से कर सकते हैं, but in service tax there was a circular, we don't have any circular, so those judgments are irrelevant. So I will try to emphasize how shall we distinguish the judgment under given circumstances. Let's take the first one. इस जजमेंट में दिस मोहित मिनरल्स they have 4 Supreme Court judgments, 2 in their favor, 2 against them. गुजरात की कंपनी है, इन्होंने बोला कि ये वेदर द कंपल्सरी स्टेट टैक्स इज बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने बोला ये एक्ट बनाया गया स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए, क्या ये अगेंस्ट द पार्लियामेंट है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है? कोर्ट सेड नो, वी आर नॉट टचिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फिर उन्होंने बोला ये जो द क्लीन एनर्जी सेस एंड स्टेट्स कॉमन सेस आर एंटायरली डिफरेंट। उन्होंने बोला हमें इनमें भी हमें इनपुट टैक्स मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रोट ए डिटेल जजमेंट एंड सेड कि दोनों के पर्पस और दोनों की टैक्सेशन एंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग है। सो दिस पर्टिकुलर एक्ट द क्लीन एनर्जी सेस एंड स्टेट्स कॉमन सेस आर एंटायरली डिफरेंट, देयर आर नो कनेक्शन विद जीएसटी, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। Why are we discussing judgment? Because these are lawyers who were innovative, who could think beyond where we didn't think. उन्हें बोला कि let's try कि ये भी तो टैक्स देते हैं हम। If the purpose of GST to one tax, one nation, and these taxes are also being levied on goods and services or both, why should we not get input tax credit for this also? But Supreme Court declined on the ground कि इसकी जो source of law है, सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है, जो हमने उस दिन देखे थे, हमने सोर्स ऑफ इनेक्टमेंट है वो डिफरेंट, इसका पर्पस बिल्कुल अलग है। इट हैज नो कनेक्शन विद सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज ओनली फॉर द वन पर्पस कि जो हमने एनर्जी क्लीन करनी है उसके जो फंड इकट्ठा करना है, दैट हैज अ डिफरेंट पर्पस। सुप्रीम कोर्ट सेड नो। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द जजमेंट कि बिफोर वी जंप टू अ कंक्लूजन, फॉर एग्जांपल वी अप्लाई अ जजमेंट बाय रेफरेंस, कस्टम एक्ट की है, कोई एक्साइज एक्ट की है, कोई इनकम टैक्स एक्ट की है, दे ऑल डील विद टैक्सेशन। Income tax, of course, is a direct taxation, but those judgments can also be relevant here in GST regime. We have to see क्या वो हमारी GST से judgment link हो सकती है, लिंक हो सकती है, then you start doing research and develop it कि हाँ ये काम हो सकता है। लेकिन most of the Supreme Court judgments on such issues are against the petitioners. Next, please, Rahul. This is Safari Retreat. Pick up section 17.5. इसमें सेम सेक्शन है तो चेंज नहीं। We have done this earlier, we'll do it again today. Notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18. Section 18 को छोड़ दो, not relevant. So what does 16.1 says? 16.1 says at what under what circumstances will you be eligible to claim input tax credit? You should be a registered taxpayer, you should have tax invoice, and you should have purchased the goods or services of both in the course or furtherance of business. That is 16.1. तो 16.1 वो कहता है notwithstanding anything contained in 16.1, that is 16.1 में जो भी लिखा है, आपका टैक्स इनवॉइस है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, आपने जो गुड सर्विस खरीदे हैं वो आपके बिजनेस के लिए, फर्दरेंस के लिए, even then you will not get input tax credit. That is the purpose of notwithstanding and non-obstante clause. Means this particular clause shall overpower what? Only subsection 1 of section 16, because this is overpowering on that particular section only, nothing else. So notwithstanding one of input tax credit shall not be available, the words used is shall not be available. So there are two negative classes in one subsection, notwithstanding and shall. I'm sorry. So there are two negative classes, clauses, notwithstanding and shall not be available. तो 16 कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं,
आप कोई सामान या सर्विसेज खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए या फर्दरेंस के लिए, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, प्रोवाइडेड यू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(2), राइट। तो ये कहते हैं नहीं, एट सोर्स ही आपको नहीं मिलेगा, तो 16(2) बिकम्स इररिलेवेंट हियर। अगर 16(1) में आप नहीं आते तो 16(2) में आप पहुंच नहीं सकते। जैसे सब्सिक्वेंट सबसेक्शन यू कैन नॉट रीच 16(2) इफ यू डोंट सेटिस्फाई सेक्शन 16(1). So they say shall not be available in respect of the following. So remember, in respect of this phrase is restrictive in nature. नीचे चीजों के लिए आपको ये सारे वर्ड्स आपने शुरू में पढ़े थे डेफिनेशन क्लॉज में। In respect of the following, namely motor vehicles for transportation, we can forget it. We will touch this part. Go to D. C and D. C and D. Works contract service. So what is works contract service? क्या होती है बताओ? देखो आगे 2119 पढ़ो, नहीं पढ़ो नहीं, मतलब आगे से ध्यान रखो, उसको देखो साथ साथ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेक्शन 2119, when supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery, except where it is an input service for further supply of works contract service. So it allows you, it does not allow you. So within this subclause you have a law and an exception there too. अगर किसी immovable property का आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, now it is for construction, not for sale or purchase. Construction word has a particular connotation. It's not dealing in trade in buildings. वहां तो कोई इनपुट मिलने वैसे नहीं मिलना आपको. So construction of immovable property which is immovable. So what is immovable property? That cannot be dismantled, attached to earth. It cannot be detached unless the property is totally finished and damaged. मोटा मोटा ये एक डिफॉल्ट रूल है immovable property का. इसे डिफॉल्ट रूल, इट्स नॉट एग्जैक्टली द लॉ, दिस इज डिफॉल्ट रूल. Except where it is input service for further supply of works contract. That is, if you were a contractor and a subcontractor were doing the service to you, then the tax you pay to subcontractor against the tax invoice, for that you shall get input tax credit. So within the one clause you have positive and negative both, right? And D is D what was interpreted in Safari Retreat, goods or services of both. C deals with works contract service. There is a marked difference. You have to read the law. Works contract service is 2119. D does not refer to works contract service. It says goods or services or both. दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है. C specifically refers to works contract service. D does not refer to any service. It says goods, आपने goods खरीदे हैं और सर्विसेज खरीदे हैं और बहुत खरीदे हैं by a taxable person, not a registered taxable person. We all know the difference now. Taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account. मतलब वो जो गुड्स और सर्विसेज द्वारा खरीद रहा है किसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑन हिज ओन अकाउंट. दैट इज ही इज बाइंग मटेरियल हिमसेल्फ बाय एम्प्लॉइंग लेबर, ही इज कंस्ट्रक्टिंग हिमसेल्फ. Supposing you make a house, you buy your material, everything, and now you construct. This is construction on your own account, because now you are not a contractor. You are neither a contractor nor a subcontractor. You are the owner of a property. You are constructing for your own. When such goods or services both are used in the course, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business. If you were the owner, you were buying goods, services or both to construction of immovable property on your own account, and on your own account के बाद उन्होंने एक including word add कर दिया, including when you construct such immovable property on your own account in the course or furtherance of your business, right? Supposing I construct a restaurant, मैंने अपनी बिल्डिंग बनाई, रेस्टोरेंट चलाना है. अगर तो मैंने खाली बिल्डिंग बनाई, वहां तो मुझे मिलता नहीं, इन एडी कैसे मुझे नहीं मिलता, नॉट डूइंग बिजनेस. तो पहली क्लास से तो वैसे बाहर हो गया मैं. अब जब उन्होंने
बीच में इंक्लूडिंग वर्ड ऐड कर दिया, उन्होंने बोला इंक्लूडिंग व्हेन यू मेक सच रेस्टोरेंट ऑन योर ओन अकाउंट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस, हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे अदर देन प्लांट एंड मशीनरी. नाउ there was an advanced ruling in Odisha Advanced Ruling Authority where they said following the 17(5)(d) they said कि ये जो आपने माल वूल बनाए हम इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, बिकॉज द फ्रेज इज कि व्हेन यू कंस्ट्रक्ट एनिमल प्रॉपर्टी एंड बाय गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ ऑन योर ओन अकाउंट इंक्लूडिंग इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस, हम आपको आईटीसी नहीं देंगे. केस वेंट टू उड़ीसा हाई कोर्ट. उड़ीसा हाई कोर्ट ओनली इंटरप्रेटेड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट. इसके जो पर्टिकुलर फैक्चुअल मैट्रिक्स था वो ये था, इसने शुरू से कहा था कि मैं माल बना रहा हूं किराए के लिए बना रहा हूं. जो इसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में लाए और जो दैट डॉक्यूमेंट एविडेंस वर एप्रिशिएटेड बाय हाई कोर्ट, दोस कॉन्ट्रैक्ट्स, दे सेड कि ही बिल्ट दिस मॉल ओनली फॉर रेंटिंग. सो दे इन देयर ओन इंटरप्रिटेशन दे वेंट इनटू द जीएसटी पॉलिसी, सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको, ये सब बातें लिखी गई. उन्होंने बोला ऑन हिज अकाउंट will not include when he constructs for renting, especially when commercial renting is a taxable service. So they allowed the input tax credit. The state came to Supreme. What does Supreme Court say? It is still pending. High Court held that the provision of 75(d) of CGST Act is to be read down. The narrow restriction as imposed by the department is not required to be accepted. The very purpose of the credit is to give benefit to the assessee. If the assessee is required to pay GST on the rental income arising out of the investment on which he has paid GST, it is required to have the input tax on GST, which is required to pay under section so and so of the CGST Act. इसके आगे भी देखा, आगे कुछ है एक पैरा हो रहा है इसमें क्या? No, पीछे जाओ. Now, Supreme Court issued notice, did not stay the judgment of Odisha High Court. So indication we lawyers get that this may be set aside. But even after this judgment, few people more approached advanced ruling authorities. They did not follow safari retreat in Odisha also. I have done one of the cases in Odisha. We didn't go to High Court because matter pending in Supreme Court. Nothing will happen. They said we have filed SLP against Odisha High Court judgment, which is pending. The notice has been issued. But as long as the judgment was not stayed by Supreme Court, they were bound by it. Based on these judgments, many chartered accountants had approached us at that time, should we take input tax credit or not? At that time, our view was, we should not, because the words used were availment or utilization. The and word was not there. But now we change the opinion, if you have the limitation, claim it. You will not suffer any interest or penalty, because the word is amended retrospectively, word and, section 50 especially. अब अगर आपने क्लेम नहीं किया, then nothing to worry, because the Supreme Court gives a judgment, this is a ground for claiming input tax credit. So safari retreat is a very leading judgment. अगर आप कोई रियल एस्टेट के लिए काम करते हैं तो इसका आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस जजमेंट को समझना. नेक्स्ट, उन्होंने बोला ऑन हिज अकाउंट मींस ऑन हिज अकाउंट विल नॉट इंक्लूड व्हेन यू आर मेकिंग फॉर रेंट. अब द काउंटर आर्गुमेंट इज हाउ कम यू से सो. ऑन हिज अकाउंट इज फर्दर क्लैरिफाइड इंक्लूडिंग व्हेन यू मेक दिस इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ द बिजनेस. तो अगर हमने रेंटिंग आपका बिजनेस था तो वहां भी बाहर है ये. बट उड़ीसा हाई कोर्ट read down this provision going into GST policy. GST presupposes seamless input tax credit. जहां जब आप आउटपुट सर्विस पे टैक्स ले रहे हो, ये भी खा जाओगे, वो भी खा जाओगे, सारा खा जाओगे आप. डबल टैक्सेशन नहीं होता, but the assessee suffers both. First he pays on purchases, then he also pays on supply. But Supreme Court wrote this much order only, though they gave clear hints. This is the ratio of High Court judgment. Very fact the Supreme Court judges notice the ratio, the indication is clear. The safari retreat may be upheld. When we don't know. Next. This is next one. This is a judgment which, for bail matters, people often quote before the magistrate
traits. This judgment has no relevance whatsoever. It's based on certain facts of the case. This is not a ratio of the judgment. They say arrest of evasion of GST, वही fake input circular trading सब झगड़ा यही था, इसमें भी हाई कोर्ट में लिखा गया था. In the event of if 10% rebate is paid while filing an appeal, no coercive action ought to be taken and no arrest made. सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी इस केस में खड़े हुए थे, उन्होंने बोला जी अपील का प्रोविजन 10% के बाद रिकवरी स्टे हो जाती है 19 बिगिनिंग की, तो जज ने बोल दिया अरेस्ट मत करो. बट दिस जजमेंट व्हेन वी कोर्ट बिफोर द कोर्ट्स, नो रेलेवेंस. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, बेल वर डिनाइड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर पुटिंग दिस फोर लाइन ऑफ जजमेंट इज कि does other day we were discussing, does 10% deposit absolve you from all liabilities under criminal law? Answer is no. That is why under 73, 74 there is a explanation that this will not waive section 132 proceedings. But this is a bail matter, so there is no law laid down here. Next please, Rahul. Now we all know section 67, rule 140, rule 41. 67(6) में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सीज होती है सर्च सीजर के बाद, वो आप अटैच कर लेते हैं. 67(6) में उनको you have a right to apply for a provisional release subject to what? Read the first paragraph. This is only relevant, the judgment is very long, but these are 2-3 paragraphs relevant. State appeal challenging the interim order passed by High Court that this directing the state to release the seized goods subject to deposit of security other than cash or bank equal to value of tax and penalty to the satisfaction of assessing authority. हाई कोर्ट के पास, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बहुत सारी रिट्स गई, मतलब वकीलों ने एक दूसरे की कॉपी कर करके वहां हाई कोर्ट में भंडार लगा दिया रिटों का. हमारा ट्रक पकड़ लिया, हमारा स्कूटर रोक लिया, हमारी कार रोक ली, हमारे गुड्स रोक लिए, और हाई कोर्ट ने एक स्टैंडर्ड ऑर्डर निकाला. वकीलों ने 4-5 लाख रुपए बनाए रिट डालने के, और सबका स्टैंडर्ड ऑर्डर आया. इंटरिम ऑर्डर है, रिलीजिंग गुड्स, आपको नॉट discharging from tax liability. So state of UP filed an appeal before Supreme Court. State का मतलब ये था कि अगर if a total mechanism for release of goods has been laid down in the act, who the hell is High Court to pass such stupid orders? Should be done in the same way, but right? Though there were judgments in the past where High Courts intervened in VAT cases, sales tax cases, excise cases, but when you examine those laws was language was not as imperative as in section 67(6). Language was different. अब जो सुप्रीम कोर्ट के आगे गए वो कहते हैं ये तो सारे एक जैसे उड़ रहे हैं. वो भी हैरान थे, भाई ये क्या कर रहा है हाई कोर्ट. जो jurisdiction कमिश्नर का है, only commissioner has been given jurisdiction, and in 226 petition they are interfering. अपील में ज्यादा बात दूसरी थी. Writ is a very special remedy. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला held. So you understand this judgment is only on 67(6). रूल 140, 41 वो कंडीशन लगाते हैं क्या फॉर्म भरना है, क्या जमा करना है, क्या नहीं करना, the rules हैं. 67(6) is the main provision. A complete mechanism is predicated in the act and the rules for release and disposal of seized goods, and for which reason the High Court ought not to have entertained the writ petitions questioning the seizure of goods and to issue direction for his release. The High Court in all such cases ought to have relegated the assessee before the appropriate authority for complying with the procedure prescribed in section 67 of the act, read with rules as applicable, including provisional release of seized goods. उन्होंने बोला अगर एक्ट में ये पोजीशन थी आपकी, तो why are you entertaining for what? पैसे ले रहे हो क्या? अब इसके आगे एक पैराग्राफ है, देखा मैंने नहीं forget it. अब यहां स्टेट ने बोला जी ये तो आपके पास जो आई है अपील एक दो हैं, वहां तो hundreds हैं, अभी और लाइन में लगी हैं और काफी फाइल हो चुकी हैं और डेट पे नहीं आई. उन्होंने एक लिस्ट दी उनको इन्फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट एवर ऑर्डर इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री. ऑर्डर कभी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक पास नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट जजेस वर सो एंग्री, कहते तुमने जीएसटी का मजाक बना के रख दिया. वो जाता है 2 पेज की गंदी बंदी रिट लिख के कॉपी कर रखी, सब लोगों ने कट पेस्ट करके करी जा रहे हो.
उन्होंने बोला नॉट ओनली ऑल द ऑर्डर्स पास टिल टुडे बाय हाई कोर्ट आर क्वेश्ड, but also all those writ petitions that are still to come up for initiation, admission, they are also quashed. That is, High Court had not applied their mind at all on those writ petitions. वो उनके आगे फाइल अभी आई नहीं थी. उन्होंने बोला all those are also quashed. हाई कोर्ट के खिलाफ उन्होंने बड़े स्ट्रिक्चर पास किए. हिमाचल और इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तराखंड, 3 कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हमेशा स्ट्रिक्चर पास करते हैं. हाँ, बस तीनों हाई कोर्ट के वैसे मैंने भी नैनीताल में किसी केस किया 2-3 महीने पहले, बहुत बुरी हालत है. वो पहले बोलते थे हम करा देंगे, बोलो क्या कराना. अब हमारे यहाँ से क्या करेंगे जाके. वो क्लाइंट कहते हैं जी आपसे नहीं होना, हम इससे करवा लेंगे. ये करवा देगा, करवाए हैं इसने. So when Supreme Court said so, Supreme Court said all these assessees shall appear before the respective jurisdictional proper officers, and they will, the jurisdictional officer will put his discretion and release the goods. So this is first ever judgment passed, I think anywhere in the world. मैंने कोई ऐसी जजमेंट नहीं पढ़ी जहां जो रिट अभी कोर्ट में आई भी नहीं थी, सिर्फ उनको भी क्वैश कर दिया. And you are fortunate कि many of these officers don't know this judgment, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल नॉलेज स्प्रेड नहीं करते डिपार्टमेंट में. But this is a very very serious judgment. So in other words, whenever we are seized with an opportunity, जहां हमारे को 67 में हमारे गुड्स रिलीफ सीज किए जाते हैं या कुछ भी होता है, we have to be careful. हमें you have to follow the procedure. हम वकील बोलेंगे अरे हाई कोर्ट में देख लेंगे, वो आपने देखना है, वकील ने कुछ नहीं देखना. हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा. आप अफसर को गालियां पढ़वाओगे, स्ट्रिक्चर पास करवाओगे, बट गुड्स आपके यहीं से रिलीज होंगे. If the judgment is quoted before High Court cannot dare do that, pass a different order. उन्होंने लिखा है कि he should have been relegated to appellate authority. It's an appealable order. This is an order which has been adjudicated, सीज कर दिए गए, प्रोविजनल कर लिया गए. फिर उन्होंने बोला इंक्लूडिंग प्रोविजनल रिलीज. उन्होंने टू मेक इट मोर एम्बेडेड बोला कि 67(6) में भी यही लॉ लागू होगा. So whenever you are seized with this kind of a matter, read this judgment, apply to the facts of the case, then take a decision आपको क्या करना है. Next, this is the case of Sapna Jain. This entire history started with Telangana High Court in case of PV Ramanna. They were my client. They did not file the returns. There were a lot of problem with the input tax credit, चोरी मुगोरे का चक्कर था सारा. Hyderabad. So we advise them, don't go to High Court. because तुम्हारा सारा केस ही चोरी का है. As you cannot deny. You have tax invoices from people who never existed in the world. राशन कार्ड फोर्स थे, सब कुछ फोर्स था, तो इट वाज नॉट देयर रिस्पांसिबिलिटी. हाई कोर्ट के आगे 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन उन्होंने रेस किए. पहले उन्होंने बोला कि वेदर आर्टिकल 2 to 6 इज मेंटेनेबल. हाई कोर्ट सेड यस. इट्स अ न्यू लॉ, इट्स अ वेरी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, वी विल एंटरटेन इट. उनके आगे बड़े एक्साइज के और दिल्ली हाई कोर्ट में मेक माई ट्रिप की जजमेंट वगैरह कोर्ट की गई. थर्ड इश्यू द केम, दे सेड कि इफ वी गो फॉर कंपाउंडिंग इट. तीनों क्वेश्चन हाई कोर्ट ने आंसर किए. उन्होंने बोला जो मेक माई ट्रिप जजमेंट हैज नो रेलेवेंस हियर. इवन सुप्रीम कोर्ट सेड इन वन ऑफ द केसेस नो रेलेवेंस. द एसेंशियल क्वेश्चन वाज रेज्ड बिफोर द कोर्ट वाज कि कैन आई बी अरेस्टेड, जो मेरे खिलाफ कोई हुआ ही नहीं है. आई हैव नॉट बीन हर्ड, आई हैव नॉट बीन असेस्ड, मेरे डॉक्यूमेंट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई. आई हैव नो आइडिया. आपने कहीं की रेड की, वहां 6 बंदों ने बोला कि आपने वर्मा जी को माल बेचा है, वर्मा जी भी चोर बन गए, वो भी चोर बन गए, आपने मुझे पकड़ लिया. हाई कोर्ट पास्ड अ वेरी लेंथी जजमेंट. दे सेड द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी which is auto populated online like Bharti Airtel judgment, कुछ भारतीय एयरटेल में भी इसका रेफरेंस था. उन्होंने बोला नो, दिस लॉ सेक्शन 132 रेड विथ 69 does not require any determination of your guilt at the stage of arrest. Trial can go on. This was the essential line of Telangana High Court. Telangana High Court came to Supreme Court. Supreme Court said question law is open, but we are not staying the judgment. यहाँ भी लिखा this judgment should be followed by all the high courts. छोटा सा ऑर्डर था, वो ऑर्डर इसमें कहीं है मेरे ख्याल.
अब दिस वाज ए केस इन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफ सपना जैन, ए सिमिलर केस। अब उन्होंने क्या हेल्ड किया, देखिए, हेल्ड एज डिफरेंट नो सॉरी जजमेंट, सपना जैन में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दे दिया, नॉटविथस्टैंडिंग पीवी रमन्ना एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बिकॉज दिस बेल मैटर्स आर इंटरिम मैटर्स, they are not binding, they do not declare a law under article 141, so high courts can take a different view. It is not a subordinate to Supreme Court in any way, except that article 141 42 make orders of Supreme Court binding on all the courts. Otherwise constitution में कहीं नहीं है कि high court, Delhi high court is a subordinate to Supreme Court. No, they are both are constitutional courts, both draw the power of a constitution. अब जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के पास से 3-4 हाई कोर्ट के जजमेंट हो गए, एक मद्रास का था, तेलंगाना का था, बॉम्बे का था, तो दे हैव टेकन डिफरेंट व्यू। अब सपना जैन के केस में जब केस पुट अप हुआ, उन्होंने बोला भी हाई कोर्ट से टेकिंग डिफरेंट व्यू, विल हैव टू डिसाइड। इस बात का 4 साल हो गए, पता नहीं कहां पड़ा होगा रजिस्ट्री, किसी मिट्टी खा रहा होगा केस। हम लोगों ने क्या हेल्ड किया, दिस 4 लाइन ऑफ रीडिंग, एज डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हैव टेकन डाइवर्जेंट व्यूज इन द मैटर, वी आर ऑफ द व्यू दैट द पोजीशन इन लॉ शुड बी क्लैरिफाइड बाय दिस कोर्ट। When will they clarify? जब आधा हिंदुस्तान जेल में होगा, maybe that time, we don't know. As the accused respondents have been granted the privilege of pre-arrest bail by the High Court by the impugned order, at this stage we are not inclined to interfere with the same. Why? Supreme Court have all the reason to cancel the bail, all the powers. You have given a bail against our orders. We approved PV Ramanna case. We say please follow it. But since bail is an interim matter, a factual matrix, discretionary matter for the court, they say we are not going to interview. Sapna Jain remains at large. However, we make it clear that the High Courts, while entertaining such a request in bail, will keep in mind that this court, by order dated so, had dismissed this petition filed against the judgment and order of Telangana High Court in a similar matter, where the High Court of Telangana had taken a view contrary to the which had been held by Bombay High Court. The special liberty court dismissed. उन्होंने यहाँ फिर रिपीट किया कि हमने तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ एसएलपी डिसमिस की है और हमें डायरेक्शन दिया, अब इसको मानो, बट इस केस में उन्होंने इंटरफियर नहीं किया। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सिंपली इफ एज ए प्रोफेशनल यू पिक अप अदर हाई कोर्ट जजमेंट एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट, दिस इंटरिम ऑर्डर्स हैव नो वैल्यू। इफ देयर इज अ बेल मैटर, यू विल हैव टू शो योर केस कि आपको बेल मिलनी चाहिए। वो तो फैक्ट्स है, वो छोड़ो ना। एसेंशियल क्वेश्चन लॉ वाज दिस, वो हिंड्रेंस की, उसने कहा मैं कंपाउंड करवा वाले 225 करोड़ रुपए दे दो, हमको छोड़ देते के लिए। एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि टिल द गिल्ट इज प्रूव। अब इफ यू गो बैक अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी इन लॉ, द लॉ इज अनलेस यू प्रूव मेंस रिया, द पर्सन इज सपोज्ड टू बी नॉट गिल्टी। बट हाँ, तेलंगाना हाई कोर्ट ने लिखा, कहता देयर विल बी क्रिमिनल केसेस, जीएसटी इवेजन हैज बीन नोटिफाइड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 132, उसकी सजा दी गई है, एंड दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। तो मेक माई ट्रिप को उन्होंने नहीं माना। देयर आर टू व्यूज, इवन आई हैव ए व्यू कि मेक माई ट्रिप में मानना चाहिए था, लेकिन मेक माई ट्रिप में जो लॉ था वो इस लॉ से अलग है। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेज वी विल क्लैरिफाई। सो व्हेन पीपल आर अरेस्टेड एंड दे मेक ए ह्यू एंड क्राई, कोर्ट क्यों नहीं बेल देती? कोर्ट को मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया हुआ जजमेंट है। जो बेल देते हैं दे आर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, वे कहते हैं यहां लॉ लागू नहीं होता। फॉर एग्जांपल, किसी का 50 करोड़ का इवेजन है, उसे 25 करोड़ रुपए जमा करा दिए, तो दिस फैक्ट्स चेंज। एक और भी केस पढ़ेंगे जहां 5 साल की कैद होती है सस्पेंस के लिए, 25 महीने वो ऑलरेडी जेल में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर आधी सजा तो भुगत चुका है, भी तो उसका ट्रायल होना है, on this ground we release him on bail. So again those matters are factually, context अगर अलग बनता है तो आप you can argue a matter, but more or less if you take this point will have no relevance in any court of law कि हमारी असेसमेंट नहीं हुई, हमें कन्फ्रंट नहीं किया गया, हमारे को पूछा नहीं गया। एक केस में एक और हुआ, वो भी इस केस में है, उसने कहा जी हमारा इन्होंने बैंक गारंटी अनकैश की, मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया, मेरा चेक था इनके पास, मेरे को बिना नोटिस दिए चेक कैश कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अच्छा तुम्हें पहले दिया था क्या बैंक से पैसे निकाल रहे आप? सुप्रीम कोर्ट में रीजनिंग दी कि जो भी एग्री
बट सच इज द रिकवरी प्रोसीजर। अगर आपको पहले बताते तो आपके पैसे तो रात को भी निकाल लेते 12 बजे आप। आजकल के जमाने में डिजिटल बैंकिंग है। नेक्स्ट, दिस ए केस वी डिस्कस अदर डे आल्सो, बट दिस इज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कि जो हम 10% पैसा जमा कराते हैं, इज इट ए टैक्स और ए डिपॉजिट? Though this judgment is slightly different, but it lays down a similar ratio. यहां केरला हाईकोर्ट की जजमेंट के खिलाफ उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि डिपॉजिट सो मच मनी विच शैल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। ये उनके ऑर्डर में लिखा था। एंड when the assessee won the appeal and they refunded 6%, not 9%, which was the case deposit पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा our order was clear, it's a deposit. And this analogy follows in all cases of pre-deposit, because when you are depositing 10%, you're not depositing a tax. You are depositing a condition to enforce your statutory right to file appeal. There's a precondition which lawmakers have given you कि अब 10% का टैक्स आपको जमा कराना है। जो एडमिट टैक्स जमा कराने हैं, that is not a deposit. What you are putting as admin tax in your चालान, जो भी आप चालान भरते हो, right? Whereas when you're depositing 10%, this is only for section 1076. इन्होंने लिखा held the applicant to pay the amount equivalent to tax payable that was to be treated as deposit with the department and not payment of tax dues. वो कह रहे हमारे ऑर्डर में क्लियर लिखा था। Therefore, assessee has a case, they allowed him. And this case we follow for all deposits because there are other judgment we say जो जितने pre-deposits हैं, they are not taxes, they are not output tax liabilities. You cannot even adjust. If you read this Kerala High Court judgment or each judgment in detail, you will find to know what Supreme Court wrote on all this issue against Kerala High Court, the Kerala government. Next. And now even a summon case has gone to Supreme Court. Read section 70. Pick up section 70 again, because summon is an important issue. We should recapitulate the law again. छह लाइन का लॉ है। The proper officer under this act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner as provided in the case of civil court under provisions of Code of Civil Procedure 1908. Every such inquiry referred in subsection 1 shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of section 193 and section 228 of Indian Penal Code. ये 6 लाइन का सेक्शन है। Any proper officer under this act. Now, what is the word? The proper officer. Not any or a, the proper. जिसको jurisdiction delegate किया गया, only he is the proper officer. आपको समन भेजता है, आप नहीं जाते, आप नहीं जाना चाहते। फिर वो कहता है ये सारी proceedings हैं under CRPC, they are judicial proceedings. अगर आप झूठ बोलते हो, डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करते हो, झूठे गवाह बनाते हो, तो 7 साल की कैद है, इसमें बेल नहीं मिलती। यू आर ट्राइंग टू चीट द कोर्ट। इससे बड़ी चीटिंग कोई नहीं होती। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो एमडी साहब थे, ये बहुत बड़ा मानते थे। पिटीशन पर कोर्ट में गया, जी ये समन को क्वैश कर दो, दे दो कि मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकती अपनी, आई डोंट वांट टू गिव इट। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो रिमेंबर क्लासिफिकेशन, एचएसएन झगड़े ये भी बहुत आने वाले हैं। पाइपलाइन में बहुत सारे झगड़े इन्होंने इकट्ठे किए। असेसी एसएलपी अगेंस्ट ग्राउंड समन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हेल्ड we decline to interfere in the special petition. However, it will be open to the petitioner to request the concerned authority to refer the recording of statement of the petition until the lockdown is over. The request, Supreme Court did not interfere. कहता the only liberty which is given to you, you go back to the authority, वहां जाके रिक्वेस्ट करो जी कोविड मर जाएंगे हम आपके पास आते आते ही, इसको डेफर कर दो। वो डिस्कशन कोर्ट ने वो डिस्कशन यहाँ एंटरटेन नहीं किया। वो डायरेक्शन दे सकता था, बट द इंपॉर्टेंट जजमेंट इज कि where the jurisdiction exists with a particular officer, court will not entertain unless you say this is perverse, they have flouted all rules. अब ईडी ने संजय राउत को पकड़ा, कोर्ट ने इसको कोई बात नहीं, मैंने सारे को ऑर्डर पढ़े, not a single argument was accepted by them. अभी पीएमएलए में सेक्शन 3 में आप चार्ज होते हो, बेल मिलनी नहीं आपको। Tomorrow if these big leaders are arrested, कांग्रेस के,
इनको 5-5 6 साल बेल नहीं मिलेगी, जेल में मर जाएंगे सारे. So that is the law. If you heard lecture of Dr. Chandrachud yesterday, I heard him complete 40 minutes lecture on video. He says you go to court to seek justice, but law may not be just. Law is law. Your argument may be justified, you may be absolutely correct, relief should be given, but if law against you, we cannot do justice to you. So this is what such laws are. इस समन केस में आपको शुरू से बोलता हूं, कभी आपको उसको अवॉइड नहीं करना. But it will perpetuate to this extent where you may have to go to Supreme Court. किसी वकील ने बोला होगा मैं करवा दूंगा, मांगा क्या जी, मेरा कोविड पीरियड है, मैं नहीं जा सकती. कहता हूँ कि वहां रिक्वेस्ट कर दे, बाद में चली जा. उस लॉयर 15-20 लाख में ले गए होंगे इनसे. वो लॉयर को पता था कुछ नहीं होना, कोई भी खड़ा होता कुछ नहीं होता. तो subsection 1 and subsection 2 of section 70 are very serious sections, especially subsection 2 के judicial proceedings हैं, आप कब तक उसको अवॉइड करेंगे. So even such cases went to Supreme Court, but Supreme Court and GST law refused to interfere. Next. अब इस केस में क्या हुआ, there were dispute about कि whether this is interstate supply or interstate supply. आपस में झगड़े थे इनके. झगड़ा इस बात का था, ये जो ट्रक वाला था ये कौन कौन से रूट में ले गया, बोर्ड डिले कर दिया, सब कुछ दूसरे सब हेरा फेरी की कहते हैं इसने. ये जो कंपनी का ट्रक वाला था, कमर्शियल स्टील कंपनी, इन्होंने सेक्शन 129 में उसको नोटिस दिया कि भाई ये तुम्हारा जो सारी पेनल्टी बनती है, जो तुमने सब गड़बड़ किया है ये. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अफसरों पे कॉस्ट लगाई. उन्होंने बोला कोई रास्ता टूट गया, कोई फसल, कोई पानी आ गया, कोई टूट गया, तो वो ट्रक वाला रूट नहीं बदलेगा क्या? तुमने इस ग्राउंड पर गुड्स रोक लिए, हरास कर रहे हो लोगों को. This is a good judgment against what all you read in High Court judgment. This is a Bible on section 129 and section 130. Let's read this. Interstate supply of goods with IGST payment. दिल्ली से रोहतक माल गया, फॉर एग्जांपल, IGST की बिल कटा, उसमें IGST की पेमेंट दी गई. Detention of the vehicle and the consignment for reason wrong destination. वो रोहतक के रास्ते में नहीं, वो किसी और यूपी के रास्ते चला गया होगा. रोहतक हर जगह रास्ते जाते हैं, उन्होंने पकड़ लिया, wrong destination. Revenue presumption of local sale as there was no reason for the transporter for taking the longer route and avoiding the normal route. This was the reason given for invoking section 129 levying penalty. Collection of tax and penalty under threat of detention, जो ये सब करते हैं. Revenue challenge to High Court order on the ground that the High Court was not justified in entertaining writ petition under Article 2 to 6 of the Constitution when an alternative remedy would have been available to the assessee. Now distinguish this from Cape and fragrances. There Supreme Court said appeal. उन्होंने कहा हाँ भी अपील जाना चाहिए था, हाई कोर्ट ने कैसे एंटरटेन कर दिया, सब कुछ क्रैश कर दिया. केप एंड फ्रैग्रेंस उन्होंने क्लियरली बोला है कि इसमें मैकेनिज्म में आपको अल्टरनेटिव रेमेडी अपील अबाउट केप एंड फ्रैग्रेंसेस. व्हाट दे रोट, held till the next date of this thing there shall be a stay of operation of the impugned court judgment and order of the High Court. Next please. We'll get this slide early because ये interim order था इसका. उस केस में इन्होंने कमर्शियल वाले केस में उसमें पेनल्टी लगाई, कॉस्ट लगाई, काफी स्ट्रिक्चर पास किए, कहते दिस इज नो रीजन टू इन्वोक सच पावर्स. So therefore High Court was right in entertaining the writ petition. So Supreme Court, two cases under, though that was section 167, but the ratio was clear. If there's an alternative remedy under section 107, you follow the appeal route. Bharti Airtel, importance of circulars. They board issued a circular clarifying the provision section 39. उसके पैरा 2 में उन्होंने सेक्शन 39 को जो रेशियो था उसको पूरा रिप्रोड्यूस किया, और भारतीय एयरटेल ने जो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट था जो क्लेम करना था वो नहीं किया. उन्होंने बोला कि ये जो 2A जो ऑटोमेटिक आता है वो उस टाइम नहीं था. Therefore we were had sufficient reason not to claim it. Supreme Court, we will read these 3 slides. Supreme Court took a very serious view of this. कहते हैं, is there no law? Law है ना? Automation क्या मतलब है? आप बुक्स अकाउंट नहीं बनाते अपनी क्या? And you were a company who were dealing with service tax for ages.
You knew the law. Same law is here. We don't buy this argument. And they passed virtual stricture against Delhi High Court. You should not have passed this order. They rejected the entire claim of 936 crores. Only on the interpretation of a circular. Now let us say circular was not there. As a lawyer, we think, let's say in a case there is no such circular in a given set of circumstances. I think the law will still remain the same. Because they say there is law available, notwithstanding circular. Let's read this. Appeal by Union of India challenging Delhi High Court order allowing the rectification of return from July 17 to September 17, only 3 months. And reading down para 4 of circular. So law is if a circular you challenge, High Court can either say this is against the law, or the circular can be read down to give benefit to the petitioners. Here para 2 of circular 4, they read down, say this we read down because this is not in accordance with law. तो इस सर्कुलर के हिसाब से हम रीड डाउन करते हैं, उसको बेनिफिट देते हैं. To the extent that it restricts the rectification of GSTR 3B in respect of the period in which the error has occurred and permitting excessive rectification by GSTB for the period to which the error relates. Right to avail of input tax credit for discharge of the output tax liability. उन्हें बोले सर्कुलर कहता है कि आप 3B रिटर्न रेक्टिफाई नहीं कर सकते आफ्टर द लिमिटेशन सेक्शन 39(1). रेक्टिफिकेशन नॉट पॉसिबल. उन्हें बोला भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है. कंपनी का व्यू इसमें ये था, वी रीड इट फर्दर, कि जी पहले तो हमने उनको टैक्स दिया, अब ये कहते कैश छोड़ दो, वो भी मांग रहे हैं हमारे से, हम कहां से दें? अब इट वाज ए जस्ट आर्गुमेंट. दैट्स व्हाट Bhakchandra said. Law is not always just. Law is law. Isn't it inconsistent? No. On the one say, the Supreme Court itself says that the circulars are not binding on them. They wrote this in this. That's what उन्होंने बोला है कि the senior advocates have not pointed out what is wrong with the circular. Circular 2 is a exact replica of section 39. That's statute. ये पॉइंट लिया गया था क्या? उस yes. There is a problem in this circular because the circular issued in September 2017 said that we will come with GSTR 3 and you will be allowed to amend. ये पॉइंट लिए गए थे, यही तो बोल रहे कहते हैं भाई डोंट गिव. उन्होंने बोला कि योर आर्गुमेंट इज फैलेशियस. दे टोल्ड सीनियर लॉयर कि ये आर्गुमेंट हमारा है, दिस इज फैलेशियस आर्गुमेंट. ये पॉइंट पर कंसीडर किए गए थे ना, 2A 3 सब कंसीडर किए गए थे वहां पर. हाँ बोलो. इसमें दो सर्कुलर का इशू है. एक जो सितंबर में आया जिसमें कहा गया कि 3B जो रिटर्न है वो टेम्पररी रिटर्न है और हम आपको अमेंडमेंट का ऑप्शन देंगे अभी आप फाइल कर. और 29/12 को जो सर्कुलर आया उसमें उन्होंने कहा कि हम 3B को ही कंटिन्यू करेंगे, 3 नहीं लाएंगे तो आपको अमेंडमेंट नहीं मिलेगा. इसमें एक गलती भारतीय एयरटेल की ये है कि 17-18 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का टाइम मार्च 2019 तक कर दिया गया था और अक्टूबर 2018 में 2A दिख गया था. They had sufficient time to claim ITC. नहीं, अगर 19 तक कर गया तो इवन देन इट वुड हैव टेकन. How will Supreme Court judgment come into play? That's what they have to told. Why didn't you claim it at that time within the limitation available? से एक तो है इस केस के फैक्ट्स, ये तो फैक्ट्स हैं भारतीय एयरटेल के. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ऑटोमेशन की इशू को है ही नहीं. ये देयर नो इशू लाइक दिस. आई एम गोइंग टू रीड दैट पैराग्राफ व्हिच आई लाइक्ड इन दिस जजमेंट. ये सब आर्गुमेंट फैलेशियस है, ये कंप्यूटर पे नहीं आया था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था. हैव दे चेंज द लॉ? दे आस्क द क्वेश्चन, हैव दे चेंज द लॉ? लॉ इज सेम. And you were dealing in, Dr. Chandra, you wrote that you were dealing with service tax matters. You are not a one. वही बात है कि it's a so big a company. I so big a company, you can't take this blue. Forget the company. Forget जितना भी हमारा कोई लेना देना नहीं उससे. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी, I'm impressed. I even made a video on this. A lot of people commented negatively on this. I don't bother. But I think this judgment is absolutely correct. You have to follow the law. I same say जो हम जो समर वाला मैंने भी 3 रीट डाली हुई है, स्टे है हमारे पास. तो आई नो वी आर गोइंग टू लूज दिस केस. भारतीय एयरटेल के बाद नहीं होने वाला कुछ भी. अब एक और केस करेंगे जिन्होंने भारतीय एयरटेल के बेस पे उसको किया. दी लॉयर्स मेड एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश भारतीय एयरटेल. दे सेड नो. एक पेज का ऑर्डर बात के इससे मेरे को इससे अगला स्लाइड में ध्यान नहीं. लेट्स रीड दिस.
primarily of the grievance of assessees due to known operability of Form GST 2A at the relevant time, July to September. It had been denied to assess the information about its electronic credit ledger account and consequently availing of ITC for the relevant period, and instead to discharge the automatic liability by paying cash, resulting in payment of double tax and unfair advantage to the department because of their failure to operationalize the statutory forms enabling auto-populating statement of inward supplies of the recipient. And अब इनका point यही था, and this was actually a stupid argument. A circular can never change the law. या तो circular challenge करते हैं illegal है. This challenge was never done. If you want to challenge a particular circular, it must be challenged. Court cannot give you relief which you have not prayed for. I think वहीं पे उनका वहां जे फंस गए थे. ये वहीं मिस हो गई है. जब मैंने वीडियो बनाया था तो उनका एक सीए मेरा दोस्त है, उसका मुझे फोन आया था, कहता यू आर राइट. मैं कहा यू आर, जो तुम्हारा केस किया है ना, उनके ऊपर केस कर दो. Claim entire damages from the law firm. You want me to send a notice? I will send the notice. They misguided you. दोस्तों करोड़ों रुपए बहुत पैसे होते हैं किसी कंपनी के लिए. तभी इन्होंने बाद में 2G वाले केस में किस्तें मांगी थी. इस केस के बाद ये थिंग इज मनी विल कम. अब इन्होंने सारे पॉइंट लिए कि जी 2A तो आपका अभी कंप्यूटराइज ही नहीं था, हमारे को पता नहीं था हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या है. सुप्रीम कोर्ट, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते अपनी क्या? तुम्हें पता नहीं मैं कहां से माल खरीदा था, टैक्स एनवाइस नहीं थे तुम्हारे पास. तो दिस आर्गुमेंट वाज मेड कोर्ट वेरी एंग्री कि व्हाट इज दिस आर्गुमेंट. नेक्स्ट आगे सुनो कोर्ट क्या कहते हैं. The High Court did not inquire into the congenital question as to whether the writ petitioner was required to be fully or wholly dependent on the auto-generated information in the electronic common platform for discharging its obligation to party liability for the relevant period. Up this paragraph judges wrote, supposing High Court had inquired and given a finding on this issue, क्या इनके बिना नहीं हो सकता था, then would the Supreme Court judgment have been different? Answer is no. This is just an argument by the Supreme Court. What they write later, they give answer to this paragraph also. नबल हाई कोर्ट ने इस चीज को एड्रेस ही नहीं किया. दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं. फॉर एग्जांपल दे डिड द केस ऑफ ब्रांड इक्विटी. इट वाज द मोस्ट हॉरेंडस जजमेंट दे पास्ड. द आंसर इज एन एम्फेटिक नो. दिस इज व्हाट लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज. Unanimous 3 judges judgment. The answer is an emphatic no. Assessee, being a registered person, was under a legal obligation to maintain books of accounts and records as per the provisions of CGST Act and chapter so and so regarding the transaction respect of which the output tax liability would occur. और बोला कि सर्कुलर लिखा है कि आप सारे लीगल ऑब्लिगेशन खत्म हो गए आपके. That's why the judges told the senior advocate, your argument is full of fallaciousness. It has no meaning. किसी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को इतने बड़े वकील को ऐसा बोलना, इट्स ए ह्यूज इंसल्ट. हमारे ट्रिब्यूनल बोल देता है हमें रात को नींद नहीं आती है, क्या बकवास सुन के आ गए, वहां से गलती कर दी हमने. आगे देखो. Even during the pre-GST regime, the assessee had been maintaining such books of accounts and records and submitting returns on its own. तब तो ऑटो पब्लिकेशन नहीं था ना, तभी तो फाइल कर रहे थे ना. So even if you did not have 2A on your portal, you were still supposed to file returns. No such auto-populated electronic data was invoked. It is the same pattern which had to be followed by registered person in the post-GST regime. Registered person is obliged to do self-assessment of ITC. Now, this is a relevant question of law. Once you say under section 58, the return filing is a self-assessment. So can you take a point कि वो population नहीं था तो हमने self-assessment गलत कर दी? Who did not claim? Will it lie in your mouth? तो रिटर्न सारी गलत होगी. नहीं, चलो इसमें तुमने क्लेम नहीं किया तो गलती का कोई मतलब नहीं, पैसे लिए नहीं डिपार्टमेंट से, फिर तो कोई बात नहीं. Now, court said, can you say that once a particular post GST regime follows a self-assessment principle, इसका मतलब ये आप लॉ फॉलो नहीं करेंगे, बाद में रेक्टिफिकेशन डालते रहेंगे. आगे सुनो. It is the same pattern which the registered person is obliged to self-assess with ITC, reckon its eligibility to ITC and output tax liability, including the balance amount lying in cash or credit ledger, primarily on the basis of his office record and books of accounts required to be statutorily preserved and updated from time to time. Now, supposing उन्होंने ये गलती नहीं की थी, let's extend this argument. उन्होंने सारे इनवॉइसेस क्लेम कर लेते, तब तक 2A was not in operation. At best, their claims could have been adjudicated. That's all.
74 का नोटिस तभी आ सकता था, आपने गलत क्लेम किया। माइनस प्लस हो जाता वो एक एक्शन अलग था, इन्होंने वो भी नहीं किया। तो ये सारे आर्गुमेंट जो आप ले रहे हो अभिषेक, ये सारे आर्गुमेंट हर वकील ने सारा आर्गुमेंट लिया था। मैंने सारे 80 पेज ध्यान से पढ़े हुए हैं इसके। इनिशियली पढ़ा था, खून भी खोल रहा था, ये क्या बकवास है यार, और 900 करोड़ रुपए उड़ा दिया बंदे का। बट वंस यू एज ए लॉयर यू सी इट फ्रॉम लीगल एंगल, इट्स अ परफेक्ट जजमेंट। दैट्स व्हाई दे डिड नॉट go to court and say refer to a larger bench. You have to file a review. इनके खिलाफ प्री जीएसटी रिजीम की जजमेंट्स हैं, इस जजमेंट के खिलाफ हैं, लेकिन फिर क्या बोलेंगे जाके रिव्यू में? ऐसा उन्होंने कोई आर्गुमेंट छोड़ा ही नहीं जिसको उन्होंने काटा नहीं। आगे चलो, आगे है? और आगे चले ना अभिषेक को बताना। हाँ बताओ। यकीन नहीं अगर आता तुझे ओए होए, तो आजमा के देख ले। हाँ। एक बार तू जरा थोड़ा मुस्कुरा के देख ले। जो ना सोचा होगा तूने वो भी मिलेगा तुझे। एक बार जीएसटी सुप्रीम कोर्ट की भारतीय एयरटेल की जजमेंट उठा के देख। आगे अगर मैं रिलायंस से होता ना, मैं इस लॉ फर्म को कोर्ट में सारी उम्र खड़ी देता, इनका लाइसेंस कैंसिल करवा देता। वो तो ठीक है, तो हाउ डज इट मैटर? ऑब्वियसली यार, वो इतना गधा था जो 900 करोड़ पे कंप्यूटर डुबो के रख दी, उसको तो जेल में डालना चाहिए था। सारी लायबल हो गई ना। मैं कहता हूं सपोजिंग राहुल वाज डीलिंग, आई वाज डीलिंग, वी शुड हैव बीन इन जेल। इट्स ए कंप्लीट नेग्लिजेंस। हमारे यहाँ लॉयर सीएस की तो बनती है, लॉयर्स को भी लोग जेल में डालते नहीं जल्दी, डरते हैं। विकैरियस लायबिलिटी बनती है इस केस में। और चलो एम्प्लॉय को तो डिसमिस करना है, नॉट ए बिग थिंग। वो तो he should have resigned out of shame what he has done. हाँ, तो बकरा उसको बनना था। नेक्स्ट प्लीज, चलो नेक्स्ट लेट्स वी हैव टू फिनिश। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये डबल हो गया, इससे आगे चलो। क्या अब ये कॉमन पोर्टल का जो क्वेश्चन आप अभी रेज कर रहे थे, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी। द कॉमन पोर्टल इज ओनली ए फैसिलिटेटर to feed or retrieve such information and need not be primary source of doing self-assessment. What does it mean? हाँ, मैंने इसको बहुत बारी पढ़ा था, बहुत अच्छी जजमेंट लिखी हुई है। लेट अस से आपके पास 10 टैक्स इनवॉइस हैं जिसमें 1 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपके 2A में 4 आते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग अमेंडमेंट इन द सेक्शन 16। मैं 10 का 10 क्लेम करता हूं, तो क्या करेंगे मेरा ये? That's all. और तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, राइट? दैट इज आई एम डूइंग माई सेल्फ असेसमेंट, आई एम नॉट फॉलोइंग योर 2A, हेल विद यू। अगर मेरे सप्लायर में कोविड में आग लग गई, बाढ़ आ गई और 10 करोड़ रुपए टैक्स है, मैं 10 करोड़ रुपए कहां से दूंगा आपको? एंड व्हाई विल आई गिव इट टू यू? राइट? So that's why Supreme Court, this line is very critical. The common portal is only a facilitator. ये अमेंडमेंट से पहले क्या है, बट अमेंडमेंट के बाद को खास इसका काम ही फैसिलिटेट करना है कि आप देखो कितने बिल है, उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। देखा जाए ये तो बहुत सारे केसेस में फायदेमंद है। ये फायदेमंद है, मैं भी यही बोल रहा हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग द अमेंडमेंट 2A के बिना आप नहीं लेंगे। आई एम सेइंग तभी इसके बाद उन्होंने इसको अमेंडमेंट किया था कि हम 2A की रजिस्ट्रेशन डालेंगे लॉ में। But I'm saying notwithstanding amendment, this still remains a common facilitator. The common portal is only a facilitator to feed or retrieve said information and need not be primary source of doing self-assessment. The question of reading down paragraph 4 of said circular would have arisen, Abhishek Rajaram, suno, if the same was to be in conflict with the express provision of CGST Act and rules framed thereunder. They gave a finding this circular is perfectly valid. We could request, अगर कहीं हमारा conflict दिखता है इसके साथ, आगे सुनो क्या लिखते हैं वो। The express provision in the form of 39(9) post that omission or incorrect particular furnished in the return GST can be corrected in the return to be furnished in the month or quarter during which omission or in particulars are noticed. This very position has been restated in impugned circular. This is therefore not contrary. So you had no argument whatsoever. Because the circular paragraph 2, when you read, you have read more. मैं काम करता नहीं, but I have read the circular very carefully. इसमें सारा quoted है। मैं बोला इसमें what is wrong? तो 39(9) में लिखा वही तो लिखा उन्होंने इसमें।
What does it mean? If you want to rectify a return, if you are out of limitation, ये राहुल जो कह रहा है वो एक अलग बात है कि आप September 4 तक क्लेम कर सकते थे. Rectification and claims are two different issues. Rectification is when you notice a error. जिस क्वार्टर या मंथ में आप एरर नोट करते हो वहां आप रेक्टिफाई कर सकते हो. The September return is also to some extent rectification. To some extent, but this is not rectification of return filed. Because you have not filed a return for those matters. आपने रिटर्न फाइल की ही नहीं उसके लिए, तो रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे आप? There you are adjusting your tax liability by filing form 9 and 9C. That's the adjustment of your tax liability. आपने रिवर्स करना है नहीं करना है, RCM दिया या नहीं दिया, right? So there they said कि no, we find nothing wrong with the circular. All those points were taken, such a long judgment. सारे पॉइंट लिए गए थे, एक भी पॉइंट. Therefore review could have been another suicide for them. See, same case happened with 2G. I don't know whether you find this kind of judgments as an author. I do read because I do work on those lines. 2G में क्या हुआ था? It was a contract interpretation कि what is the meaning of gross revenue? What is gross aggregate revenue? बोला कि we agree what you are saying is correct. But this is a private contract signed between government and you. It's not a statutory contract. You agree with this definition. How can we change? We can change the definition. Only on this score, these companies paid more than 45,000 crore penalty only on this contractual interpretation. लिखा है इसकी डेफिनेशन डिफाइंड है, गलत थी. आप ये हमारा सीए कहता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, सब कुछ लिखा था उन्होंने कि सीए का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. वो कहते एक पैरा वो लिखा जज ने अकाउंटिंग से सीए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. डोंट डिस्टर्ब दिस कोर्ट. सीए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वी बुक कीपर्स. मतलब उन्होंने जो हथकंडे अपना सकते थे अपनाए थे कि हमारे पेनल्टी ना लगे. But judges were clear that this is the contract you have signed and this is the only point of the government. 87 judgments are quoted on contract interpretation in that judgment, 2D judgment. Again, conclusion, we cannot change the definition. So sometime what is done is not just, but this is law. Bharti Airtel is such a case. Very badly handled case at all levels. This is the worst case handled in GST by जिसने भी हैंडल किया है. Yes. मतलब उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आर्गुमेंट खत्म कर दिया. मतलब कुछ बचा ही नहीं ना, आपको बचा ही नहीं कुछ कि ऐसा डिवोर्स किया है कि साला वो दोबारा शादी नहीं हो सकती और मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी जब तक वो लड़की जिंदा है. ये इनका हाल हुआ. मनी इज गॉन एंड दे डिड नॉट डेयर टू फाइल अनदर पिटीशन. दे शुड हैव फाइल्ड. ट्राई करने में क्या नुकसान था? 15-20 लाख वकील ले जाते और क्या होता? They did not because they were so flabbergasted. सीधा सी होगी ये क्या जजमेंट है? नेक्स्ट आगे सुनो. One more argument. The High Court, however, erroneously noted there is no provision in the Act which restricts such rectification of return in the period in which the error is noticed. This is a High Court judgment. They did not read 39(9). अगर जी आपके हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट ये लिखता है उनके बारे में, then this is to be thought कि क्या हो रहा है ये. It is then noted by High Court that as there is no possibility of getting refund of surplus or excess ITC mechanism in the electoral measure, therefore the only remedy that can enable the representative to enjoy the benefits is by way of rectification by annual tax return GST 3B for the relevant period. Further, the High Court in para so and so judgment noted that relief sought to be in case before it was indispensable. Relief मिलना ही चाहिए. इसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया. क्या कहते हैं? द लॉजिक डज नॉट कमेंट टू अस. आप पुट दिस पैराग्राफ इन दिस मॉडल ताकि ये इशू था. इन्होंने क्या बोला, बड़ा मजा आता है पढ़ने में. For there is no provision regarding refund of surplus or excess ITC in the electronic credit ledger, it does not follow that the assessee concerned who has discharged output tax liability by paying cash, which is free to pay in cash in spite of the surplus or excess credit ledger account, can later on ask for swapping of the entries so as to show the corresponding OTL in the cash ledger from where he can take the refund. Payment for discharge of whatever cash or by way of availing ITC is a matter of option, which having been accessed by the assessee cannot be reversed. ये दरवाजा बंद हो गया आपका. आपके पास ECL में 10 लाख रुपए हैं. आपका जो GST बंदा सैक है उसको पता नहीं 10 लाख, वो कहता है 10 लाख कैश जमा करा दिया. ना कैन यू से नहीं ये रिवर्स कर दो यार. There is no provision.
रिफंड मिल नहीं सकता, रिफंड 54 से कवर होता है। आगे सुनो, कैन नॉट बी रिवर्स अनलेस द एक्ट and the rules permit such reversal or swapping of the entries. As a matter of fact, section 39(9) provides for an express mechanism to correct the error in the returns if the month or quarter during which such omission or have been noticed. Now, if you see 39(9) limitation, it also corresponds with September. But 39(9) is the primary source of law. September is a collateral advantage given to you. अगर आपको रिटर्न सेक्शन 39 की रेक्टिफिकेशन करनी है तो पीरियड जहां वही रहेगा, समर वाला नहीं रहेगा. दैट इज द कंफ्लिक्ट बिटवीन 39(9), दो इज द सेम थिंग मेंशन्ड इन 16(4), लेकिन इसका कंफ्लिक्ट जहां इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि और कोई प्रीजन में इसका कुछ है नहीं. नेक्स्ट. सो भारती एयरटेल teaches us 3 lessons. Before you rely upon a circular and says the circular is invalid, you must go through the provision that does this violate the provision of a law. If not, read Bharti Airtel again. Number 2, always say there's a distinction between rectification and adjusting your tax liability in Form 9 and 9C. जो भी ये फॉर्म होते हैं 16(4) में, दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो बिल्कुल अलग हैं. दे आर नॉट सेम थिंग्स एट ऑल. उन्होंने बोला है कि रेक्टिफिकेशन का रिटर्न का प्रोविजन सेक्शन 39(9) है. तो व्हाट डज इट मीन कि जो आप 16(4) में जाते हैं वो प्रोविजन अलग है, उसका पर्पस अलग है, उसका इवेंट अलग है. ये उसी का है जहां आपने नोटिस एरर की, उसी में आपको रेक्टिफाई करना है. नंबर 3 कि बिफोर यू रेक्टिफाई द रिटर्न और मेक ए 16(4) क्लेम, 16(4) स्पेशली व्हेन यू फाइल फॉर्म 9(9C), जिसमें बहुत बड़ी गलतियां हैं जो आप केसेस निकल के आ रहे हैं, वो मोस्टली सारे फॉर्म गलत भरे गए हैं. मेरे पास 3-4 केसेस हैं, सीएजी लेकर आए हैं एंड दे एडमिट हमने फॉर्म गलत भरे. इन वन केस इवन बैलेंस शीट इज नॉट रिकंसाइल्ड. बैलेंस शीट, दिल्ली की बैलेंस शीट देखी नहीं उन्होंने, तो बिना दिल्ली के ट्रायल बैलेंस के हाउ कैन यू रिकंसाइल? कैन वी, राहुल, अभिषेक, कैन वी रिकंसाइल? They didn't have a Delhi trial balance and liability is 33 crores. I told the client Supreme Court, लंबी लड़ाई है, जब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको. You cannot afford to file है, पता नहीं अब. We shall hope, isn't it? We shall hope. Now this is another case. Read 16(2)(C. पहले पढ़ो इसको क्या कहता है 16(2)(C) before we come on this. Subject to provision of section 4, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through direct minimum credit and in respect of such supply. In various writ petitions, including the 3 filed by us, we say this petition is onerous. How can a supplier ensure? How can a recipient ensure that the supplier has paid tax as per section 16(2)(C)? ये कैसे मैं इंश्योर करूं भाई? उसके 3B आ गई, आपको 2A आ गया. अब उसके बाद कहते हो ये चोर था, ये भागा हुआ था, ये टैक्स इवेडर था, ये सर्कुलर ट्रेडिंग करते थे, आप सारे मिले हुए थे. These are all factors which are post downloading of 2A. So various petitions are filed in various high courts. Some high courts state the show cause notice, some just admit it without any further argument. Delhi में भी 3-4 pending. What did Supreme Court say this? ये 2021 की जजमेंट है. Trial petition by Union of India under seeking. Union of India वहां गई अपील केस में कि ये सारे केस आप अपने पास ट्रांसफर कर लो, आप ही डिसाइड करके इसको खत्म कर दो जान को. Supreme Court said no. This is a primary source of law dispute. High Court must give their finding. जैसे अभी किसी केस में उन्होंने बोला था दिल्ली हाई कोर्ट को आप डिसाइड करो. कौन से केस में था? इशू था ना, आई फॉरगेटिंग द इशू. They said first decide then we will say. Delhi High Court will decide by next month end. तो इस केस में उन्होंने मना कर दिया. That is the input tax dispute, such a great dispute, even Supreme Court doesn't want to touch. Now the question is here, lot of people quote judgment of Supreme Court, Arise India.
Arise India was a judgment which act जहां एक similar provision existed. As Supreme Court said, this is not the duty of the buyer to ensure seller pays tax, and buyer cannot be denied input tax credit if he otherwise legally eligible to claim input tax credit as per section 9(1) read with 9(2). ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी. अब जब हमने इस केस को एग्जामिन किया, इन माय व्यू अराइज इंडिया हैज नो रेलेवेंस इन दिस केस, क्योंकि जो सेक्शन 9 की कंडीशन थी, ये कंडीशन स्कीम बिल्कुल अलग है. टोटल स्कीम इज डिफरेंट. That was a state act. This is not a state act. This is an international act, right? Therefore, Arise India judgment, we also quote, even now we quote, but I know this has no relevance. Gerumal, Arise India, no. Because here they say, and against Arise India, there is a judgment of Mahalakshmi Cotton Textile Mill, Maharashtra Act में. One on section 48 में बोला कि no, you still have to prove. तो दोनों conflicting judgments वहाँ हैं. तो 16(2)(c), you have to wait, we court decides first. ये झगड़ा चलता रहेगा. तो ये जितने सर्कुलर ट्रेडिंग के झगड़े हैं, जो लोग जेल में हैं, उसे ये टैक्स नहीं दिया. नाउ दिस वन सर्कुलर व्हिच केम ऑन फेक सर्कुलर ट्रेडिंग लास्ट मंथ, which says if you have issued a fake invoice without supply of goods, there is no liability upon you. मतलब you start the चोरी, तेरे को छोड़ देंगे हम. तेरे को 122 की पेनल्टी का 10 पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी लगाएंगे बस, हैं? Only last person said it. Right? But in this circular, let's spend 5 minutes in circular. This circular has 3 ramifications. It deals with output tax liability, it deals with input tax liability, it deals with the role of intermediaries. If Mr. A was the first supplier of goods or services or both, he commits offense of section 132(1) Roman A. That is, he issues a tax invoice without supplying the goods. कहते इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है. दे एंकर के जब हम कहते हैं सप्लाई नहीं की, तो जीएसटी पे टैक्स कैसे लगाएंगे? आप खुद बोले सप्लाई नहीं की. बट इफ द पर्सन टू whom he supplies the goods based on that tax invoice along with which no goods came, he claims input tax credit, he is in trouble. Right? Now if in turn this man supplies the goods to Mr. C, only these goods, he is also in trouble. Then the entire chain goes out. Only when you are able to prove that you physically received the goods. Remember section 16 we debated? The language is past perfect tense. It is onus upon you to prove. Since input tax credit is a concession, it's not your fundamental right. No tax right is fundamental right except when you claim that something is tax free. That is held to be a fundamental right by Supreme Court. If you say these are tax free, I cannot be taxed, Supreme Court has said in many cases this can be enforced as a fundamental right, not otherwise. So since input tax credit is a concession given by state, this can be regulated, and this has been regulated by 4 subsections of section 16, 1, 2, 3, 4. So you have to wait for this answer, and I can tell you this answer is going to surprise us like Bharti Airtel. Arise India will not be followed in GST law. It's my personal view. I wish I am wrong. Now Supreme Court many times, like the recent judgment they have given on brand equity, they did not go into the merits of the brand equity at all. Any judgment, they okay, हम 2 महीने के लिए खोल देते, चलो GST को तो खोलो 2 महीने के लिए. Now judges also shy away from passing judgments on such important point. Whether in tax laws can you invoke limitation act like brand equity? उसमें 3 साल की लिमिटेशन है, इसलिए आप 3 साल तक इसको खोले रखो. Why did Supreme Court pass this order? Not judgment कि जीएसटी को टैक्स दे दिया, आप खोल दो. एक तो था कि it's beneficial to the taxpayers. Now second is, if law was unjust, why should they grant benefit? What was told by Dr. Chandrachud yesterday in his lecture, law doesn't give you justice. Sometimes law may not be just. इसमें तो लॉ जस्ट नहीं था, ब्रांड इक्विटी जजमेंट गलत थी, और तभी इन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ ओपन रखा था. क्वेश्चन लॉ डिसाइड किया ही नहीं गया. उन्होंने बोला खत्म हो गए झगड़े सारे, 2 साल मारो को लीजिए, ले जाओ जो लेना आप. तो ये भी कंक्लूजन इनको था ना कि majority of the high courts had passed favor. Supreme Court is the supreme interpreter of law. Correct.
Then you have decided. Not with Hmm? Except Mahalakshmi Cotton Mill, Bombay High Court. No other High Court have favored department. In these cases, in that But those high court don't matter also much, no? If you read Tamil Nadu judgment, it's both sides. It's not a clear judgment. Except Gerumal. Gerumal started the controversy before Arise India. My question is, उससे पहले बहुत जजमेंट थी. उससे पहले भी जजमेंट थी, मिल्कफूड की जजमेंट थी, दिल्ली हाई कोर्ट की. सेलिब्रेट जजमेंट है, पेंटेक सेल्स कॉर्पोरेशन है, सुप्रीम कोर्ट की वो केदारनाथ थी. वो सब they are in those schemes of law. Now, if the legal scheme is changed, Bharti Airtel is not an example. इनपुट टैक्स क्रेडिट खोल दिया, इतने सालों के बाद 2 महीने के लिए खोल दिया, इंटरेस्ट रिटर्न नहीं खोल सकते थे क्या? डिफरेंस इज दिस, बिकॉज दे से जो ऑटो फिल जो बकवास कर रहे हो, 2A नहीं था, ये नहीं था, ये फ्लैशेस बकवास आर्गुमेंट है. पहले आप किताबें नहीं बनाते थे क्या? दे रीडिफाइंड सेल्फ असेसमेंट थ्योरी इन भारती एयरटेल. हु स्टॉप्ड यू फॉर क्लेमिंग इट? रिटर्न में क्लेम करना था ना, क्लेम तो कर लेते आप. 2A नहीं था. आप एक बात है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी. इतना बड़ा आपका 500 बंदों का आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है भारतीय एयरटेल का, 550 लोग काम करते हैं वहां. इसका मतलब किताब ही नहीं बनाते आप, ऐसे ही पर्ची पर रिटर्न करते हो. सो व्हेन वी रीड दीज जजमेंट्स, वी आल्सो हैव क्वेश्चंस एज लॉयर्स, बट देन ईच जजमेंट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन मेरिट्स. ये जीएसटी काउंसिल को 2 महीने खोलना, दिस इज ए extremely sweeping kind of an, and government is going to lose more than 10,000 crore rupees. Sitaraman said in parliament, we will lose more than 10,000 crores. So judge didn't want to go into Bharti Airtel. Oh, sorry, these judgments of transition input tax credit. चाहिए ये मंगाइए, देखो फिर मैं तो पता नहीं है, तो फिर चलते रहेंगे हम तो. तुम्हें नींद आ रही है, बाकी तो किसी को नींद नहीं आ रही है. अभी आपने एएफटी में काफी काम किया होगा ना कल. नहीं, वो तो हाई कोर्ट वाले क्लियर है कि टिल यू फॉलो 73-74 डिमांड रिकवरी चैप्टर, यू कैन नॉट रिकवर टैक्स. बट यू हैव टू गो टू कोर्ट अगेन. अब जमा क्यों कराते हो? प्रॉब्लम ये है, कोर्ट जाओ, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है बाद में. You are dealing with a very unjust tax regime who use extortion and coercion to pay your taxes. मेरी एक डिप्टी कमिश्नर 5 साल लगातार मेरे केस स्क्रूटनी में डाल दिया इनकम टैक्स में, 5 years कंटिन्यूअस. तो मेरा अपना दोस्त है बचपन का, अशोक वर्मा, ही डील्स विद माय रिटर्न. मेरे को तो, मैंने कभी रिटर्न भी देखी भी नहीं आज तक. 5 year मैं कह रहा अशोक आपकी जवाब मैं दूंगा, तुम मत जाना. ऐसा क्या हो गया? मैं कह नहीं यार, टेक देम ऑन, इट्स टू मच. किसी साल में डिमांड कभी 5,000, 10,000, 20,000 की डिमांड हमने जमा करा दी. तो पहली बार जो कौन आईटी पे मिंटो रोड पे नया सिटी सेंटर, तो आई बार्ज इनटू अ रूम. शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, साउथ इंडियन, सज के बैठी हुई थी अच्छी तरह. यस, मैं काम सुशील वर्मा, यू कॉल्ड मी. यस, आई कॉल्ड यू. आई डोंट नो व्हाई डिड शी कॉल मी, मुझे पता भी नहीं था, पर नोटिस था. मैं कहा व्हाई डू यू पुट मी स्क्रूटनी, अंडर व्हाट लॉ, व्हाट डू यू डू? मेरे घर में रेड कर लो. मैं कहा एवरी ईयर यू ट्रबल मी, 5th year in a row. कहता मैंने अशोक को गालियां दी कि क्या रिटर्न भरते हो यार. उसको झगड़ा किया. आई वाज वेरी एंग्री, बट ड्रेस में था. कहती मिस वर्मा पानी तो पीजिए, बैठिए. मैं कहा सिट डाउन, ऑफ कोर्स यू आर एन ऑफिसर, आई एम बाउंड टू सिट हियर. कहती है डिडंट कॉल यू फॉर दिस, आई वांट यू टू नो व्हाट डू यू डू. वो दे रहे थे ना पत्र पुत्र ताम्र पत्र, गुड टैक्स पेयर. कहती मिस्टर वर्मा हमने सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया है, ये नोटिस गलत चला गया. कहती आप तो सिर्फ चढ़ चुड़ के, मैं कहती आप फेड अप. हर साल मेरे को मैं कहती डिमांड निकालो, 15-20-25 लाख की डिमांड निकालो तो बात बनती है. मैंने एक बार शो को बोला, मैं कहीं इन सबकी रेक्टिफिकेशन डाल 154 में, दिस अमाउंट इज नॉट पेएबल बाय अस. तो ये एक्सटॉर्शन बिजनेस है ना, हमारे यहाँ चलेगा जब तक आपकी गवर्नमेंट टारगेट फिक्स करेंगे, वहां प्रॉब्लम रहेंगी. अभी किसी कंट्री में सुना है ऐसा? आई रीड
मेरे पास काफी जगह से अपना आर्टिकल्स आते हैं टैक्सेशन के, ऐसा कहीं नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। किसी को पकड़ लो, जर्नलिस्ट को पकड़ लो, जेल में डाल दो, पीएमएलए लगा दो, ईडी लगा दो, पुलिस लगा दो, सारा दिन यही कहते रहते हैं बैठ के। आई डोंट बॉदर, मैं क्या लेना देना उससे। आई वॉज देयर बिकॉज राज बत्रा वॉज देयर। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आई हैव नो अदरवाइज। अब नहीं हो, ऐसे मत बोलो ना। हाँ? अब नहीं हो, अभी उन्होंने किया नहीं है। नहीं नहीं, बट इवन इफ दे डू आई विल नॉट टेक इट, बिकॉज वहां किसी का कोई रोल नहीं है। कौन लिखता है आर्टिकल डीएससी में? कभी देख किसी का आर्टिकल पढ़ा आपने आज तक? मैंने तो पढ़ा है, बिकॉज राज बत्रा टोल्ड मी यू हैव टू राइट 10 आर्टिकल्स फॉर व्हाट। नीतिका कहाँ है? लंच ला रही है नहीं कभी? नीतिका कत्ल हो जाएगा अगर वो लंच नहीं लाई थी आज। अरेंज लंच। आपने फोन किया? ओके, चाय नियत में है भाई, 5 मिनट्स रेस्ट, बैठ जाते हैं 5 मिनट, बातें करते हैं। हम आ गए। गाड़ी तो आपके ही छापे हैं मैक्सिमम। नहीं, मेरे को राज बत्रा ने बोला था। अभिषेक आज आपका तो उसने जीएसटी का